हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं गाइडली का सेक्शनल मॉक नंबर 4 जो कि इंग्लिश का है। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट आरसी का क्वेश्चन है, तो इसको मार्क कर देते हैं, बाद में करेंगे। इसमें मीनिंग पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फिड्यूशियरीज एज यूज्ड इन द पैसेज। तो फिड्यूशियरीज मीन्स तो एजेंट समथिंग टाइप का होता है। फाइनली द ड्राफ्ट रूल इंक्लूड गाइडलाइन फॉर हैंडलिंग डाटा ब्रीचेस रिक्वायरिंग डाटा फिड्यूशरीज टू रिपोर्ट ब्रीच। तो यहाँ पे एजेंट्स हो सकता है, रिक्वायरिंग डाटा एजेंट टू रिपोर्ट ब्रीच। फाइनली द डाटा ड्राफ्ट रूल इंक्लूड गाइडलाइंस हैंडलिंग डाटा ब्रीचेस रिक्वायरिंग डाटा फिड्यूशरीज टू रिपोर्ट ब्रीच। ट्रस्टीज भी हो सकता है, तो मार्क कर देते हैं, बाद में देखते हैं। 2 आरसी है, ये क्या है? सिमिलर टू फॉर एजिंग, उसका तो मीनिंग नहीं पता। द रिसर्चर्स नोटेड दैट दीज बर्ड इन सर्च ऑफ सुटेबल फॉरेजिंग हैबिटेट्स हैव शिफ्टेड टू एग्रो इकोसिस्टम एंड एश्योरीज अबंडनिंग देयर नेचुरल वेटलैंड होम्स। तो इन सर्च ऑफ सुटेबल, तो फूड टाइप का समथिंग, तो माइग्रेटिंग, हंटिंग हो, माइग्रेटिंग, नेस्टिंग, रोमिंग। तो हंटिंग हो सकता है खाने से रिलेटेड, तो ये होगा। इसमें क्या है, एरर बताना है। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हैज़ कॉल्ड फॉर एन अर्जेंट रिव्यू ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज़ that has been implemented during the last quarter to mitigate the financial challenges posed by पता नहीं। The newly appointed finance minister has announced a slew of measures aimed at boosting the economy, which include increasing नहीं पता। The team of doctors have been working tirelessly। तो टीम ऑफ डॉक्टर को सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो हैव बीन नहीं होगा। फिर द टीम ऑफ डॉक्टर हैज़ बीन और हैड बीन समथिंग होगा। Neither the CEO of the company nor the employees who are responsible for implementing the new policies was aware of the changes made to the company's operational procedure। तो नहीं पता इसका। The team was eager to collaborate with the project and it was tasked with providing solution for improving productivity within the organization। इसमें भी कुछ नहीं समझ आ रहा। The team was eager to collaborate in the project नहीं होना चाहिए, in the project नहीं होगा। Collaborate to the project और with the project ऐसा कुछ होना चाहिए। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिट इन द बोल्ड वर्ड, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज़ इंटेंसिफाइंग एवरी ईयर, एग्रवेटिंग कम्युनिटीज, इकोनॉमी एंड इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड। एग्रवेटिंग, तो एक्सकर्वेट हो सकता है, डिक्रीजिंग, सॉफ्टनिंग, डिमिनिशिंग और रिस्टोरिंग ऑल आर समथिंग लाइक पॉजिटिव होगा, तो ये वाला ही होना चाहिए, एक्सकर्वेट। The WMO said 2024 is set to become the hottest year on the record, beginning of a decade filled with unprecedented heat। तो the hottest year on the record, culminating a decade, resuming a decade तो नहीं होगा, disrupting भी नहीं हो सकता, ignoring भी नहीं हो सकता, तो फिर यही होगा। In the words of UN Secretary General Antonio Guterres, we have just witnessed a decade of deadly heat, with the top 10 hottest years occurring। We have just witnessed, avoided तो नहीं होगा, surpassed, we have just surpassed, neglected भी नहीं होगा, endured। We have just witnessed a decade of deadly heat।
तो नो करेक्शन शायद सही है। 22. The astounding rise in greenhouse gas level deteriorates to historic high, locking in a future drift. The gas level deteriorates. To conclude, intensify, recedes or decline. Gas level recedes to historic high. Recedes means तो पीछे जाना होता है। गैस लेवल बूम्स टू हिस्टोरिक हाई, बूम कह सकते हैं। लॉकिंग इन अ फ्यूचर ब्रेफ्ट विथ मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर डायर वेदर इवेंट्स। लॉकिंग इन अ फ्यूचर ब्रेफ्ट मीन्स लॉकिंग इन अ फ्यूचर फुलफिल्ड तो नहीं होगा। विथ मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर, एम्प्टी विथ मोर एक्सट्रीम, फ्रॉट विथ एक्सट्रीम, अबंडेंट और पीसफुल भी नहीं होगा, तो फ्रॉट हो सकता है। दिस इज क्लाइमेट डीजेनरेशन इन रियल टाइम। दिस इज क्लाइमेट ब्रेकडाउन। एक्सपेंशन नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन ग्रोथ एट वंस, तो ब्रेकडाउन होगा। Has been instrumental in promoting peace and preventing conflict around the globe, ensuring cooperation, the role of international organizations. तो डी से स्टार्टिंग हो सकती है। The role of international organizations has been instrumental in promoting peace around the globe, ensuring cooperation and preventing conflicts. तो ये सही है। Should focus on fostering innovation government in developing countries to address critical issues like poverty and economic development. Should focus on fostering government in developing countries to address. So governments in developing country should focus on fostering innovation. तो BA innovation to address critical issue like poverty and economic, हाँ सही है। Because of the surge in demand for eco-friendly solution has gained prominence in recent year, renewable energy as a viable alternative to traditional fossil fuels. So because of surge in demand of eco-friendly solution, because of surge in demand of eco-friendly solution, renewable energy as a viable alternative has gained prominence in recent year to traditional fossil fuels. तो फिर ये बहुत लग रहा है मुझे। The team was excited to present their project which had been worked on for a month, which have to a panel of experienced to present their project which had been working, which they have been worked, which had been working on for a month. वर्क तो नहीं होगा, वर्किंग होगा फिर। which they had been working on for a month, तो ये वाला हो जाएगा। After a thorough investigation, the committee found that the data provided were not aligned with the organization's stated goal. were not aligned होना चाहिए, was not aligned होगा, ED आएगा। Reconcile. Due to the pain caused by the disagreement, they found it hard to reconcile their differences. She reconciled with her childhood friend after a year of estrangement. The accountant reconciled the financial statement. सेकेंड और थर्ड लग रहा है मुझे फिर। Bolster the manager bolstered her team morale with a motivational speech. The government is planning to bolster the economy while reducing taxes and increasing public spending.
The heavy rain burst into the town, causing widespread flooding. थॉट तो नहीं है. तो फिर फर्स्ट एंड सेकेंड होगा. The professor scrutinized the research paper to ensure there were no errors in the methodology. She scrutinized over her decision to take gap year after ये भी सही है. The traveler was scrutinized at the airport security checkpoint. सारे सही लग रहे हैं. The professor scrutinized the research paper. She scrutinizes over her decision. तो फर्स्ट एंड थर्ड लग रहा है फिर मुझे. He was emanating his anger toward his colleague, creating a hostile environment. इसका तो मीनिंग मुझे पता नहीं है. To mitigate the impact of climate, nations are implementing. ये भी सही है. The doctor recommended medication to mitigate. तो ये भी सही है. She tried to mitigate her friend's excitement. ये नहीं होगा फिर. Mitigate means किसी चीज़ को कम करना होता है. Despite the lack of resources, the team decided to continue working on the project with determination. इसमें क्या बताना है? Idiom. Continue working on the project with determination. Beat around the bush, bite the bullet, burn the midnight oil, let the cat out of the bag. तो ये वाला लग रहा है फिर मुझे. Burn the midnight oil. When it started raining heavily, the outdoor event was cancelled at the last moment. Cry over spilled milk, saved by the bell at 11th hour. तो यही होगा फिर. Relinquish. The leader decided to surrender his control over the project. Retain his control over the project. ये हो सकता है. The new policy will collect the need for paper-based, introduce the need for paper-based documentation, eliminate, facilitating a more efficient process. The new policy will introduce the need for paper-based documentation, facilitating more efficient process. ये लग रहा है फिर मुझे. The authorities attempted to dash the witness into giving false testimony, to compel, to pressure the witness. तो सही लग रहा है. Discourage नहीं होगा. Persuade हो सकता है, convince भी हो सकता है. लेकिन किसी को फॉल्स यानी धमकाना तो प्रेशर ही होगा. द कंपनी फाउंड अ वे टू डैश द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, adhere the strict regulation by introducing innovative legal loopholes. Comply the strict. ये वाला लग रहा है फिर मुझे. ये नहीं पता तो आरसी कर लेते हैं. Which of the following statement is incorrect? The DPP rules 2025. ठीक है. The DPP rule 2025 are important development in securing the right to privacy for Indians. The right was recognized by the Supreme Court of India in the Justice K.S. Puthaswamy versus Union of India 17 case. The proposed rule aimed to enforce the Digital Personal Data Protection Act, which was passed over a year ago. This long delay in implementing the law, coinciding with a period of rapid growth, raises concern about protection personal data. The draft rule suggests several key measures to ensure data protection. They require online service to clearly inform user about why their data is being collected. This step is intended to help user make informed decisions about their privacy.
Additionally, the rule aims to protect children's data, addressing the risk of exploitation and misuse in the digital environment. Another significant feature of the draft rule is the creation of data protection DPBI. The DPBI would be responsible for addressing complaint. However, question remains whether it will be carrying out responsibility as concern have been raised about its independence power. The rule has also allowed government agencies to be exempt from certain provisions of the law. While this is intended to balance privacy with the national security need, has raised concern about transparency and accountability. It remains to be seen whether assumption will be priority. While draft will include guidelines for handling data breaches, requiring data fiduciary to report breaches. This is aimed at ensuring accountability, but the effectiveness of these provisions will depend on how strictly they are enforced. While the DP rules are a positive step toward better privacy protection, their success will depend on proper implementation. Data from misuse in digital environment. तो ऐसे पढ़ा था अभी. Carrying out smart compliance protection. Additionally, rule aim to protect children data resulting misuse. हाँ तो फर्स्ट वाला तो सही है. Data Protection Board of India will oversee compliance with data protection standards. ऐसा the long delays in discussing the period of concern about protection of data. ठीक है, yes, सही है. Collected make inform about their misuse in data rule. Spot and overseeing data protection of question event. ठीक है. Concern about government agency will have no exemption under the proposed rule. Government exemption such as independent and the regulation of government exemptions. तो यहाँ पे exemption की बात की जा रही है, यहाँ पे no exemption, तो सी वाला ही incorrect होगा. फिर correct पूछा. DP rule require online service to communicate the purpose of data collection to users. तो ये सही है. ऑनलाइन डिजिटल की बात की जा रही है. डिले इन इम्प्लीमेंटिंग कंसाइड विद रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडिया. ये रहा. दिस लॉन्ग डिले इन कंसाइड विद द पीरियड ऑफ रैपिड डिजिटल ग्रोथ. ये भी सही है. DPBI हैव बीन क्रिटिसाइज फॉर इट्स लैक ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये देखना पड़ेगा. रिक्वायर ठीक है. एक्सप्लोरेशन question carrying out responsibility raised about its independence power is concerned. तो सारे सही हैं. फिर all ABC. What does the author mean by privacy risk mentioned in the first paragraph? Privacy risk, the inability of user to access their own data, potential misuse of personal data due to the delay in implementing rapid growth in digitalization leading to enhanced cyber security. तो सेकेंड वाला लग रहा है. फिर delay in implementing, तो prioritize other legislation rule needed to address the rapid growth. यही वाला है. रैपिड ग्रोथ की वजह से डिले हुआ था. What can be said in reference to proposed DPDP rules 2025? Aims to completely eliminate collection of personal data. नहीं, ये तो नहीं है. Establishment of will ensure complete independence in data regulation. Protecting children's data online is one of the key focus. ये वाला ही है शायद. Additionally, the rule aims to protect children data, addressing risk. हाँ, ये वाला होगा. कहाँ गया?
According to the passage, what is the reason for the creation of Data Protection Board of India? What is the reason of creation? To regulate exemption, to address complaint, directly oversee prevent, ये तो नहीं होगा, directly oversee digital growth, ensure compliance with data protection. देखते हैं इसको. What is the reason for the creation of DPBI? DPBI कहाँ है? Another significant feature is responsible for addressing complaint and oversee data protection. तो ये वाला हो गया. फिर closest meaning of fiduciary, तो फिर मुझे agents लग रहे हैं. What are the impact of environmental changes on wading bird? दूसरा पैराग्राफ आ गया. कितना बड़ा है, पढ़ लेते हैं. छोटा सा है. Coastal and inland wetland in southern India have been facing significant decline over the past decade, particularly affecting the population of wading birds, which are key indicator of wetland health. क्या था? Environmental changes on wading bird. A study conducted by research in Kerala has highlighted the worrying trend between 10 to 19. The number of wading birds, including heroes and egrets, saw a considerable drop. Decline in primary productivity and the reduction in fish stock availability have had a direct impact on these birds, particularly the large waders. These birds are highly sensitive to environmental change, and the long-term anthropogenic human-driven alternation in their habitat have worsened their situation. The researchers noted that these birds in search of suitable foraging habitat have shifted to agro-ecosystem, but in their natural wetland home. The study tracked various environmental factors such as rainfall, ability to assess the relation between environmental changes. Decline in fish, ये वाला है शायद. ये decline primary productivity and the reduction have the direct impact, particularly large waders. उसके बाद these species are highly sensitive to anthropology. The study focused on which inclusive ecosystem refers to their importance. The continuous degradation of these wetland-driven paints a picture of the future of these vital ecosystems in southern India. Agro-ecosystems. That these birds in search of foods have shifted to agro-ecosystems in their nature wetland. तो ये वाला भी है, फर्स्ट और सेकेंड दोनों है. Anthropogenic changes increase the wader population, ये तो गलत है. Environmental changes had no effect, तो A और B दोनों होगा. फिर इसमें क्या, what is the possible consequences of wetland degradation? Decline in wading bird population, तो ये वाला तो होगा. Wetland degradation has no impact, ये गलत है. Disruption in natural ecosystem and feeding pattern. Wetland degradation has no effect on coastal, ये तो गलत है. तो ये वाला है. और एक कौन सा था? C वाला, disruption in natural ecosystem, ये हो सकता है. Ecosystem, the continuous wetland feeding patterns. The study tracking on this rainfall, ठीक है, to assess overall impact is the wading bird population.
carefully their importance when the study tagged. The search of food is shifted. Decline in primary productivity and the reduction in structure have had direct impact on large bidders. तो ये भी होगा फिर A और C. What are the major concerns regarding the impact of environmental changes on wading bird in southern India? Rapid increase in wading population in alternative habitat. नहीं. Lack of reliable data, loss of critical wetland habitat. Affecting large waders, slow response conservation effort to anthropology. तो फिर फर्स्ट वाला तो नहीं होगा. लैक ऑफ रिलायबल डाटा भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे डाटा है. अ स्टडी कंडक्टेड इन केरला हैज़ हाईलाइटेड अ वरिंग ट्रेंड. जिसमें डेटा तो है, तो ये वाला होगा. फिर अ लॉस ऑफ क्रिटिकल वेटलैंड हैबिटेट इज़ अफेक्टिंग लार्ज वेडर्स सिग्निफिकेंटली, ये दिया हुआ था. करेक्ट बताना है. वेडिंग बर्ड पॉपुलेशन डिक्लाइन इज लिंक्ड टू बोथ इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन इंटरवेंशन, तो ये सही है. वेटलैंड डिग्रेडेशन हैज़ रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ वेडिंग बर्ड टू अदर इकोसिस्टम, ये भी सही है. द स्टडी फाउंड दैट ह्यूमन एक्टिविटी हैड नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, तो ये तो गलत है. तो फर्स्ट और सेकेंड वाला सही हो जाएगा. ये हंटिंग हो गया. अकॉर्डिंग टू द पैसेज वाई इज़ द डिक्लाइन इन वेडिंग बर्ड अ सिग्निफिकेंट कंसर्न. It indicates large environmental crisis, result of natural phenomena unrelated to human, ये नहीं होगा. The bird movement to agriculture has shows adaptability, ये भी नहीं है. Dictionary is not linked, ये भी गलत है. तो only first बचा, फिर यही होगा. Indicate large environmental crisis, क्योंकि यहाँ पे दिया था ना डायरेक्ट रिलेशन है. Particularly affecting the population is के indicator of wetland. खत्म हो गया. मॉडरेट लिखा था पर मॉडरेट था नहीं, इजी था. तो सबमिट करते हैं. ये एरर के क्वेश्चन है तो इसको मैं नहीं अटेम्प्ट करूँगी अदरवाइज़. तो ठीक है, फिर सबमिट करते हैं. सबमिट नहीं हो रहा यार ये. सो फ्रेंड्स, आज के मॉक में मेरे अटेम्प्ट हुए 36 और मेरे 9 क्वेश्चन गलत हो गए. तो मेरा स्कोर बना 24.75. ऑल्दो इस पे मॉडरेट लिखा हुआ था, पर ये प्रीवियस के जितने भी मॉक लगाए मैंने इंग्लिश के, उससे ये मुझे थोड़ा इजी साइड पे लगा. तो अब परसेंटाइल एक बार देख लेते हैं. तो आज मेरी परसेंटाइल 87 आई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि ये मॉक थोड़ा इजी था और मेरे इसमें गलत ज़्यादा हो गए हैं, तो दैट्स वाई. हम आंसर्स पूरे देखेंगे. फर्स्ट का आंसर है सी वाला, सही है. और सेकंड का आंसर है ऑल ABC. और थर्ड का आंसर है सेकंड, द पोटेंशियल मिसयूज़ ऑफ पर्सनल डाटा. फोर्थ का आंसर भी सेकंड ऑप्शन है. फिफ्थ का है थर्ड. और सिक्स्थ का सेकंड है, सही है. सेवेंथ का गलत है. फिड्यूशरीज मीन्स ट्रस्टीज़ होता है, एजेंट गलत हो गया. ट्रस्टीज़ एंड डज यू मैनेज एसेट फॉर अदर्स, अच्छा ठीक है. नेक्स्ट एट्थ का आंसर A एंड B. फिर नेक्स्ट है नाइन्थ का आंसर A एंड C. और 10th का आंसर है थर्ड वाला, द लॉस ऑफ क्रिटिकल वेटलैंड. 11th का आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन. 12th का है फॉरेजिंग मीन्स हंटिंग. इसको एक बार देख लेते हैं. इन विच सिमिलर टू हंटिंग सर्च ऑफ फूड, ठीक है. 13th का फर्स्ट आंसर है. 14th का आंसर है थर्ड. इसमें क्या गलत है? दैट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर. हैज़ बीन शुड बी रिप्लेस विथ हैव बीन बिकॉज सब्जेक्ट पॉलिसी इज़ प्लूरल. तो ये है रीज़न इसका. और यहाँ पे हैज़ बीन की जगह हैव बीन होगा. और 15th में विच इंक्लूड्स इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल डेफिसिट, ये गलत है. विच इंक्लूड्स नहीं होगा, यहाँ पे विच इंक्लूड होगा, यहाँ पे एस नहीं होगा. 16 हैव बीन वर्किंग टायरलेसली, ये सही है. यहाँ पे टीम इज़ ए कलेक्टिव नाउन, तो हैव
हैज़ बीन होगा फिर। और 17 का थर्ड आंसर सही है, 18 का सेकंड है, 19 एग्रवेटिंग की जगह एक्सरबेट होगा, ये रहा रीज़न। और 20th का कल्मिनेटिंग होगा, ये रहा एक्सप्लेनेशन। और 21 का एंड्योर्ड होगा, मैंने ये गलत किया, विटनेस्ड इसकी जगह, तो इसका रीज़न ये है। और 22 का इंटेंसिफाइज होगा, डेटोरिएट्स मैंने बूम कर दिया, तो इसमें मैंने देखना है इंटेंसिफाई मीनिंग द राइज इंक्रीज हाउ, ठीक है। द ऑप्शन कंक्लूड इज डू नॉट अप्रोप्रिएटली, ठीक है। 23 का फ्रॉट होगा, 23 क्या था, ब्रेफ, तो इसकी जगह फ्रॉट होगा, मीन्स लैकिंग और डिवॉइड ऑफ समथिंग। 24 का ब्रेक डाउन होगा, ये डीजेनरेशन मीन्स, तो ये रहा रीज़न। और ये 25 का ये रहा, 26, 27 गलत है मेरा, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट होगा रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये वाला होगा। 28 का थर्ड होगा, 29 का फर्स्ट, ये मेरा सही है शायद, हाँ ये सही है। और 30th का ये होगा, ये गलत हो गया, रिकंसाइल, ठीक है। बोल्स्टर मीन्स, ये एक्सप्लेनेशन है इसका। 32 का फर्स्ट एंड थर्ड होगा आंसर, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। 33 का सेकंड एंड थर्ड होगा, और इसका मीनिंग होता है क्या, फ्लो आउट फ्रॉम अ सोर्सेज। 34 का सही है, और मिटिगेट मीन्स टू काम टेम्पर, रिड्यूस। 35 का गलत हो गया, बाइट द बुलेट मीन्स टू फेस अ डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन विद करेज, ठीक है। 36 का एट 11th आवर, ये सही है। 37 का ये होगा, और इसका रीज़न ये है। 38 भी गलत हो गया मेरा, और इसका रीज़न ये है, एक्सप्लेनेशन। 39 सही है, कोर्स मीन्स प्रेशर होता है, कंपेल, ठीक है। और बाकी के भी दिखा देती हूँ मैं। 40 भी गलत हो गया, और इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। सो फ्रेंड्स, मुस्कान ने कहा था कि आंसर्स पूरे शो किया करो, तो आज मैंने पूरे आंसर्स भी शो कर दिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आपके इंग्लिश में क्या स्कोर आ रहे हैं, डू लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।